Hello and Tashi Dileg everyone. I hope you all are doing great. So ये मंथ का जो मेरा रेसिपी है वो है KFC चिकन. So I am very excited for this. यहाँ पे कहीं पे KFC नहीं है and we are like बहुत खाने का मन कर रहा है. मेरे सिस्टर को भी खाने का मन कर रहा था और घर में कभी ट्राई भी नहीं किया तो सोचा कि let's try this time. So yeah, सुबह ही हमने मैरिनेट करके रख दिया चिकन और अभी हम लोग जो फर्दर प्रोसेस है वो करेगा. So let's start the video. For making KFC chicken, first we have to marinate chicken. So first I'm adding this little bit of black soya sauce, ginger and garlic paste. I'm also adding this Szechuan sauce with chili powder, salt, 8 black pepper if you have. Let's mix it nicely. Because of black soy sauce, color is like this. So now what I'm gonna do is I will add all the chicken. And then mix it nicely. I have mixed everything nicely and now I will add lemon here, little bit of lemon juice. I ate this black soya sauce and Szechuan sauce, that's why the color is like this. You can avoid eating Szechuan sauce. Everything is mixed properly. Now we'll keep this in refrigerator for more than 5 hours. आप लोग ज़्यादा भी रख सकते, 7 घंटा भी रख सकते, 8 घंटा भी रख सकते. So yeah, हम अभी 8 बजा है तो हम maybe I'll make it in around 1 PM. So फ्रिज में रख देगा. But there's no light. यहाँ तो आज लाइट नहीं है. Okay, so ये है चिकन जो हमने सुबह मैरिनेट करके रखा था. ये अच्छे से मैरिनेट हो गया. बिकॉज ऑफ सोया सॉस, ब्लैक सोया सॉस का वजह से ये ऐसे दिखाई दे रहे. तो हम लोग ये मैदा डालेगा थोड़ा सा. फिर 3:1 रेशियो में आप लोग डाल सकते हैं. अगर 3 स्पून मैदा डालेगा तो 1 स्पून कॉर्नफ्लोर. तो हम लोग थोड़ा सा, ये कॉर्नफ्लोर है. आई एम डूइंग एवरीथिंग बाय माई हैंड. हम हाथ से सब कुछ कर रहे हैं. ये थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और यहाँ पे हल्का सा हम लोग लाल मिर्च भी डालेगा. एंड हल्का सा हल्दी. फिर यहाँ पे सॉल्ट भी डालना है. हो गया. आप स्पून से भी मिक्स कर सकते हैं बट आई एम डूइंग एवरीथिंग बाय माई हैंड. हम लोग ये 2x स्पाइसी का साथ खाने वाले, इसलिए मिर्चा कम डाला. आप चाहे तो यहाँ और मिर्चा डाल सकते हैं. ओके, सो फाइनली हम लोग का जो इंग्रेडिएंट है वो पूरा रेडी हो गया KFC बनाने के लिए. ये है मेरा मैरिनेट करके रखा वाला चिकन और ये है कॉर्नफ्लोर और मैदा का मिक्सचर और ये है पानी. और यहाँ पे हमने तेल को ऑलरेडी बैठा के रख दिया है फ्राई करने के लिए. ओके, सो जो तेल है वो अभी गर्म हो गया लग रहा है, इसलिए हम मेरा प्रोसेस शुरू कर देगा. फिर हम इसको अच्छे से यहाँ में डीप करेगा ऐसे. फिर अभी ये भिगाने का तो इसको हम लोग वापस कोटिंग करेगा.
तेल गर्म हो गया लग रहा है, इसमें डाल देगा मम्मा। बी केयरफुल जब ये डालेगा तो। और जो फ्लेम है वो हम थोड़ा लो कर देगा ताकि ऊपर से नहीं जलने के लिए। Look at this. I'm so satisfied with the result. Look at this. अब बस टेस्ट करना बाकी है। ये लास्ट पकड़े and then we'll taste and let you guys know. आज again यहाँ पे लाइट नहीं है इसलिए कलर बहुत अलग देख रहे हैं, but I'm satisfied. Look at this. Okay, so finally my KFC chicken is done. Here is the mayonnaise, and I'm also eating this 2x spicy noodle, और ये यहाँ पे black bean noodle भी है साथ में. So let's check it out. ये कैसे बना है? See this, कितना juicy लग रहा है देखने में, और ये ठीक ही है. Okay, crispiness भी है, अंदर में भी अच्छे से पका है. I always love this. Like हमको हमेशा चमड़ा ही खाने के लिए पसंद लगते हैं. It's good. I didn't expect this. Like very delicious. Very delicious. So that's all for today's video. I hope you guys like it. Bye bye and take care.